Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important topics of this chapter, that is the structure of proteins. So let's move to the lightboard. So, structure of proteins. It is very important topic as a long, as a short, as MCQs, and also from antitrust point of view, the structure of proteins. It is also asked as, or it might be asked as, the levels of organization of proteins. तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर के नाम से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या फिर ये एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। चैप्टर नंबर 1 याद होगा आपको, उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। उसमें हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक छोटे लेवल से लेकर किस तरह मैक्सिमम लेवल तक उनकी वो तरतीब होती है, दैट इज टर्म्ड एज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से अब यहाँ पर जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और सिंपली विच वी से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अहम बात बताता चलूँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। इसके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद एक टॉपिक है, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे बच्चे जो गौर से लेक्चर नहीं सुनते, विच आर अनएबल टू फोकस ओवर द लेक्चर। वो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसमें वो लिख देते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन पूछा जाए तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिख देते हैं। हालांकि बहुत ही क्लियर कट डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर। प्रोटीन की दो ही टाइप्स हैं, अब दैट आर बेस्ड अपॉन द शेप। एक है फाइब्रस प्रोटीन्स और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दैट इज अपॉन द शेप। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये टाइप्स हैं, ये क्लासेस हैं। जबकि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम ये बताएंगे कि कोई भी प्रोटीन किस तरीके से, किस प्रोसेस से गुजर कर बनती है। ठीक है, सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, that is the topic. So dear students, the proteins possess specific properties. Every protein has its own properties. These depend upon three factors. हर प्रोटीन की अपनी अपनी खासियत है, जैसे क्लॉटिंग प्रोटीन्स पढ़ी, डिफेंस प्रोटीन्स पढ़ी, क्लियर। हर एक प्रोटीन की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक खासियत है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? 3 फैक्टर्स पे डियर स्टूडेंट्स। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1, the number of amino acids in a protein molecule. Second thing, the sequence of amino acids in a protein molecule. And number 3, dear students,
it also depends upon the shape finally attained by protein molecule after the coiling of its strands. Clear? So these are the three factors upon which the specific properties of proteins are based. So there are, dear students, there are 4 levels of organization of proteins. तो ये MCQs में पूछा जा सकता है कितने levels of organization है? 4 levels. Clear? That is, number 1, the primary structure. Number 2 is the secondary structure. Number 3 is the tertiary structure. And number 4, the quaternary structure. So we will discuss all of these 4 structures in detail. So first of all, the primary structure. Number 1 is the primary structure of proteins. और स्टूडेंट्स आम तौर पर ये क्वेश्चन कंप्लीट बहुत कम चांसेस होते हैं इसका कंप्लीट पूछा जाए द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आम तौर पर 2 पार्ट्स को पूछा जाता है, टोटल 4 हैं, 4 इसके स्ट्रक्चर्स हैं, तो 4 में से कोई से भी 2 एक्सटर्नल जो है जो एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर? लाइक जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी पूछ सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी को पूछ सकता है, या टर्शरी और क्वार्टरनरी को पूछ सकता है, या प्राइमरी और क्वार्टरनरी को पूछ सकता है, तो उसकी मर्जी है। क्लियर? नाउ इन प्राइमरी स्ट्रक्चर there are 2 important factors on which the primary structure of a protein depends. Clear? So 2 important factors हैं जिसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है। Number 1 is the first of all number of amino acids in a protein molecule, and number 2 the sequence of amino acids in the protein molecule. So ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करेंगे specificity of a protein in a primary structure.
So dear students, let's suppose these are different amino acids. These are amino acids. तो इनसे प्रोटीन बन नहीं है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, इसलिए मैंने उनको वेरियस कलर्स के अंदर ड्रॉ किया। तो पहली जो चीज़ है किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए वो है उसकी तादाद, मींस द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि क्या उसका जो नंबर है क्या वो पूरा है, और दूसरी चीज़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्या जो अमाइनो एसिड्स हैं जो सीक्वेंस डीएनए के ऊपर वो जीन की शक्ल में था क्या उसी तरतीब से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये दो प्रोसेसेस, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बिहाफ के ऊपर प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। और याद रखिए कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इट इज लीनियर, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसे प्लेन एक लाइन की तरह का होता है, ठीक है। तो अभी इन्हीं अमाइनो एसिड्स को अगर मैं तरतीब दूं, so let's suppose just for the sake of convenience I say that they are 51 amino acids. These are 51 amino acids. Now I'm getting them in a sequence. So this has been now arranged in a sequence, clear? So this is amino acid number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, clear? So that is the total number and their sequence. क्या वो जो sequence मैसेंजर आरएनए से आया था, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द डीएनए, तो क्या वो बिल्कुल इसी तरतीब से जुड़े हुए हैं और क्या उनकी तादाद पूरी है कि ये 51 से कम तो नहीं है। So that is what happens in the primary structure. So there was a scientist a biologist who worked for 10 years on the structure of insulin. Clear? Finally, after 10 years of hard working, the Frederick Sanger, his name was Sanger, discovered that the insulin consists of 51 amino acids which are arranged into two chains. Okay? तो 10 साल की अनथक मेहनत के बाद फ्रेडरिक सेंगर और एफ सेंगर जिसको कहा जाता है, इसने डिस्कवर किया कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन, व्हाट इज इंसुलिन डियर स्टूडेंट्स? इंसुलिन इज अ हार्मोन और इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है उसको मेंटेन करती है बाय लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेस करता है अबव द नॉर्मल लिमिट्स, then insulin is released from the beta cells of the pancreas and the insulin moves the glucose into the cells
एंड लोअरिंग इन द ब्लड लेवल्स। क्लियर? तो सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है इंसुलिन, ताकि ब्लड में से उसका लेवल नॉर्मलाइज हो सके। क्लियर? तो उसने देखा कि जो इंसुलिन है, जो हार्मोन है, ये 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है और इसकी एक बाकायदा तरतीब है। इसमें 2 चेन्स हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 चेन्स। ठीक है? और 1 चेन consists of 21 amino acids and the other chain consists of 30 amino acids. क्लियर? तो इंसुलिन टोटल नंबर कितना है? 51। उसमें कितने चेन्स में मौजूद है? 2 चेन्स की शक्ल में। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड्स और दूसरे चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। क्लियर? और हार्मोन है, चूंकि ये इंसुलिन हार्मोन है, सो इट इज़ द फंक्शनल प्रोटीन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर भी बाद डिस्कवर किया गया। The structure of hemoglobin. It is important regarding short questions as well. So dear students, hemoglobin is an iron containing protein present inside the red blood cells or which are called as RBCs, or which we call them as erythrocytes. Clear? So it's an iron containing protein present inside the red blood cells or RBCs or erythrocytes, and its function is to transport oxygen and carbon dioxide. So transport of oxygen and carbon dioxide, inshallah, we will discuss in chapter number 13, that is the gaseous exchange. Clear? Now, the hemoglobin consists of 4 polypeptide chains. It consists of 4 polypeptide chains, 2 alpha chains and 2 beta chains. Clear? So here we go. Alpha chain and the second alpha chain, beta chain and the second beta chain. Clear? So 2 alpha and 2 beta chains. And dear students, each alpha chain consists of 141 amino acids,
141 amino acids, and beta chain, it consists of 146 amino acids, and the same one is over here, 146 amino acids. The total makeup is of 574 amino acids are there in a single red blood cell. Clear? एक रेड ब्लड सेल के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं. इनका सीक्वेंस और इनकी तरतीब इतनी अहम है डियर स्टूडेंट्स कि अगर इनमें से एक भी अमाइनो एसिड अगर मिसप्लेस हो जाए या गलत लग जाए या उसमें म्यूटेशन आ जाए तो पूरी की पूरी जो प्रोटीन बनने वाली है इससे वो सब खराब हो जाएगी, एंड इट विल बी अनएबल टू कैरी द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द that very protein. And one thing more, dear students, you have to remember, there are 10,000 different proteins in humans which are made up of 20 different amino acids sequence. मीन्स कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितना है 20. और स्टूडेंट्स इन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से सिर्फ ह्यूमंस की बात करूं 10,000 मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं. और वो ये भी मैंने बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि एक प्रोटीन चंद अमाइनो एसिड से लेकर 3,000 अमाइनो एसिड या समटाइम उससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स पे बेस कर सकती है. क्लियर? सो चेंज in the sequence of amino acids leads to change in the structure of protein that becomes abnormal and unable to carry its normal function. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.